Hello. Hi. Good evening. Good evening to all our lovely AccuCheck Wealthy family. Thank you so much for joining today's session. Hello, Mr. Chakravarti. How are you? Thank you so much for joining today's session. Great to have you. Hello. Hi. Good evening. Hello, Pramodji. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Hello, Uma Prasad ji. Hello, Mr. Terkhedkar. Hello, Ajay Kumar. How are you? Let's wait for all our lovely AccuCheck Wealthy users and then we'll start with today's discussion. हेलो शंभूलाल जी, कैसे हैं आप? कैसी अभी तबीयत आपकी? Thank you so much for joining today's session. Yes, you see a new person on the screen who is going to help guide, motivate us today. I will shortly introduce him to all of you. Let us wait for all our lovely AccuCheck Wealthy family to start today's discussion. Hello, Jose. Good evening. How are you today? Thank you for joining. Hello, Nayan. Good evening. How are you? Thank you so much for joining today's session. Wow, I am excited to talk and discuss about today's special guest. It is going to be a great, amazing, lovely experience. I assure you that you will have a great time with our special member today. So let's wait till all of us actually understand what is today's discussion all about. It would be great if any one of you knows what is the topic for today's session. Yes, anybody would like to maybe update us or let us know what is the discussion for today? What is the topic for today? Yes, any one of you? Okay. Good evening. Active Diabetes Masterclass, absolutely correct. Thank you so much for sharing that. Let's start with today's discussion. We have a special guest. Instead of a special guest, I would actually like to tell all of you he is one amongst you. He is one of our user, one of our family member, a part of AccuCheck Wealthy program for last 2+ years. He's associated with us. Senior intellectual person. We absolutely adore his knowledge, his enthusiasm, his energy levels, and the way he actually listens to his uh, team and his members and his health coach. I think his motivation is something which is extremely amazing at this age group. And he is somebody who motivates not just me, my entire team, and I'm sure he's also going to motivate all our AccuCheck Wealthy family today. Our special guest for today, Mr. Ashok Das. um, by age he is 72 years old. By motivation, by positivity, he is only 30 years old, I would say. uh, by his hard, strict and professional life, he has maintained a good work life balance. He is completely active physically. He eats a nutritious, healthy diet. He follows everything what his health coach tells him, at least 80 to 90%. And with
all of this behavior changes, modifications in his journey, he has achieved great amount of success in the past 2 years. He has not only transformed his entire health, but also of many of his friends who are a part of his yoga groups, his circle, his family members. All of them look forward to how does he eat healthy meals, how does he replace his meals, how does he ensure he has enough exercise or activity as a part of his routine. And let us hear from him only today, just to give you a snip of his achievements. Somebody who has lost more than 4 to 5 kgs, he's fit now. He can actually run a marathon. You won't believe this, but a 72-year-old man, uh, right in front of us here, runs a marathon even today and wins it in the senior citizen age group. He also has reduced his HbA1c levels from a range of 8% to a range of almost pre-diabetic, which is 6.2, 6.3, in that particular zone. He has also worked on his blood sugar levels. His post meal blood sugars have dropped more than 200 mg per dl, and his fasting has dropped more than 150 mg per dl. Wow. For me to say all of these things, it took and actually took a while to actually understand that somebody at this age group, somebody filled with so much positivity and motivation, can actually achieve this. um, I welcome you, Ashok ji, as we address you always, Ashok ji, our most esteemed and old AccuCheck family member. Thank you so much for joining us today. We wholeheartedly welcome you on behalf of the entire AccuCheck Wellthy team. Would you like Thank to you. give us some brief introduction about yourself? Uh, a little correction. I am Sure. 75 plus. Uh, Second thing, uh, I had my active working life till I was 36 years. After that, I have become a spiritual person, and I have been busy in serving people. And now, still I am active, uh, meeting people, talking to them, and all these things are my passion. And I try to help people. And this is the basic introduction. So I have been, I was rather very disappointed in in the year 2000 beginning. हमको तभी अचानक हमारे डॉक्टर ने कहा कि गेट blood checked. Why you are having pain on your above your knees? A burning burning pain. So I said, okay, I will get it checked. I got it checked, and I was at that time 256 fasting and 300 some after PP postprandial, and everything crashed in my life. I was very disappointed and very unhappy. And for about 10-15 days, I was very sad. I didn't go for medication immediately, but I tried to drink more water. That's what I did. And subsequently, I came in touch with our doctor again, and I asked him कि हमको क्या करना है. तो उन्होंने कहा इसमें कोई चिंता की बात नहीं, आप मेडिसिन खाइए. तो हमने मेडिसिन लिया, एक टाइम लिया. उसके बाद एक टाइम से नहीं हुआ तो दोनों टाइम लेना पड़ा. उसके बाद में फिर तब भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा. He talked about walking. Walking I did.
देन उसके बाद में हमारा डोज डबल हो गया कि 1 ग्राम मेटफॉर्मिन ट्वाइस ए डे। मैं ऐसे तो मुझे मना किया गया है कि मैं बोलूं नहीं, पर एक आइडिया के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तक मैं पहुंच गया था। So it went on. Then I got a good diabetologist. He changed my after about 1 year. The problem was every year my medication has to be changed, had to be changed. प्रत्येक साल मेडिकेशन को मुझे चेंज करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, और आई वॉज नॉट फीलिंग एनर्जेटिक एट ऑल। हमको ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे बस बैठे रहना चाहिए या सोते रहना चाहिए, कुछ काम नहीं करना चाहिए। जितना मेरे अंदर में एक्टिविटी थी सब खत्म हो गई। तो the diabetologist gave me some medication. He told me to be careful with this new medication, and asked him uh, not to change the place. So I didn't change the place. That went on, but still it did not get reduced. It सबसे माने substantially कुछ तो कम हुआ। अच्छा तो लग रहा था, पर मेरे अंदर में जो एक्टिविटी जो होना चाहिए वो नहीं था। तो उनने कुछ कहा और कुछ का खाने पीने के लिए कहा, कोशिश की, तब भी जी नहीं हो रहा था। मैं उसके बाद में 2020 में 2020 में मैं ज्वाइन किया एक्यूचेक वेल्दी प्रोग्राम। देन हमने कहा वो कैसे हुआ। मैंने एक खरीदा था ग्लूकोमीटर, और ग्लूकोमीटर के पीछे क्यूआर कोड था। तो क्यूआर कोड को मैंने अ, उसको स्कैन कर दिया, एंड आई जी जॉइंड फॉर 3 months. जी That was my first introduction to AccuCheck Wealthy and the team. And in the meantime, till now I had three, uh, you know, health as a health experts with me, and they each of them excellent in their own way, and things went on, their practice went on gradually. One very interesting thing I saw, that I was not forced to go. So you have to do this, you have to do. Now slowly I was guided to maximize my control, starting from water drinking, to exercise, to even spot marching. That was gradually, in a very nice way, I have been introduced, and a nice way I was guided by my health coaches, and gradually I saw the drops. And the doctor, I great. didn't tell my doctor that I am taking help of Wealthy Care, Mm-hmm. and he was very happy that whatever medicine he is giving, it is working wonderful. So I smiled. So it went on, Mm-hmm. and right now when I check, uh, I get sometimes, most of the times rather, this fasting blood sugar less than 100, and PP 125, 130. And this time, last 6 months back, I checked, and it was 6.5. And this time also it has got still reduced, this HbA1c, which the doctors say that, so this time I went to my doctor. He was very happy. Oh my God, you have done a wonderful. So I said, my I didn't tell him, but all this credit goes to AccuCheck Wealthy. They have done it. They have introduced me what to do, what not to do, what to eat, how to eat. How to eat is very important. हम लोग क्या कहते हैं सलाद खाना है। सलाद कैसे खाना है? तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं। कितना खाना है, ये भी महत्वपूर्ण है।
सब कहते हैं नहीं साहब आपको डायबिटीज है तो आप सलाद खाइए, सलाद खा लेते हैं। और आप 6 रोटी खाते थे पहले, अभी 2 3 रोटी खाइए, उससे कुछ नहीं होता एक्चुअली। जो सीक्वेंसिंग होना चाहिए, फूड सीक्वेंसिंग, ये हमने अपने हेल्थ कोच से सीखा है। उनने उनने हमको बताया हेल्थ कैसे कैसे खाना है। पहले ये खाना है, उसके बाद में प्रोटीन खाना, पहले सलाद खाना, फिर प्रोटीन खाना, फिर उसके बाद में वेजिटेबल विथ कार्बोहाइड्रेट खाना है। ये सब सारी बातें उनने सिखाया। जी और इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनने ये नहीं कहा कि आप इसको नहीं खाइए, आप इसको खाइए पर कंट्रोल में खाइए। जैसे हमने हमारे जो वेबिनार होते हैं, मैं बहुत सीरियसली वेबिनार सुनता हूँ। मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ जो हमारे ऐप में है, उसको भी पढ़ता हूँ। और वेबिनार भी रेगुलरली अटेंड करता हूँ। मैं को किसी को एक एक भी वेबिनार नहीं छोड़ा। तो इससे क्या होता है कि मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। एंड आई फाउंड दैट आई एम एनर्जेटिक। Previously, even for a small job inside the house, I was just getting irritated. But now, no problem. Any job I can take up. Even at this age, I can stand on a chair and fix the picture for picture on the wall, and I have no problem at all. I don't feel shaky, or don't feel weak, or don't feel great, without motivation. I'm pretty good now. great, So great. I think most of us can do this. Most of us can get to this point, even further than me, further than me. And it will be interesting if you reach there and feel energetic even at any age, even at any age. बिल्कुल, Yes. बिल्कुल, बिल्कुल अशोक जी। Thank you so much for sharing a summary of your entire experience. Let us go a little back and let us start step by step in your journey. So अशोक जी, जब पहली बार आपने ये जर्नी के बारे में सुना या ये एक्यूचेक वेल्दी प्रोग्राम के बारे में सुना, तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? What did you think when you started the program? बिकॉज़ आई थिंक थोड़ा वर्चुअल है, जहाँ पे एक्चुअली आपको हेल्थ कोच मिलती नहीं है, आपको डाइट प्लान एक्चुअली नहीं देती है। तो ये सब में काफ़ी लोगों को ये एक्चुअली फ़ॉलो करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट जाता है कि अरे! ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे हेल्थ कोच दिखती नहीं है या हेल्थ कोच मिलती नहीं है या मुझे कोई प्लान बना के नहीं देता है। तो इनिशियली आपने ये सब चीज़ों के साथ कैसे कोप अप किया? एंड हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्टेड एंड मैनेज टू फॉलो द रूटीन व्हिच वाज़ गिवन टू यू? जब मैंने पहले शुरू किया, अ, मेरे मन में ये था तो देखें 3 महीने में क्या होता है, लेट अस सी। और धीरे धीरे वही थोड़ा सा एक्लमेटाइज्ड हुआ मैं हेल्थ जी, कोच लोगों से बातचीत करते करते। जो हमारी पहली हेल्थ कोच, फर्स्ट हेल्थ कोच थी, उनने भी जी, बहुत ये बढ़ाया, अब डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आई सेड ओके, 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 लेट अस ट्राई। सो उनने एक बात ये कहा था कि व्हाट एवर आई से यू यू शुड फॉलो, एंड यू कैन आस्क मी व्हाई, आई विल आस्क आंसर मी। सो जो चैट बॉक्स में हम लोग बातचीत करते थे, धीरे धीरे हमको ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं दूर बैठे हैं और चैट कर रहे हैं। हमको लगा वी आर आई एम चैटिंग विथ ए फ्रेंड। सो आई आस्क्ड मेनी थिंग्स एंड शी आंसर। Next health coach was very good, and even third health coach, the present health coach is, they are all good, excellent. I think they are trained in the same way कि आपको आपको किस तरीके से आगे बढ़े ले जाना है। सो जब बात में ये हुई है कि हमको ये परेशानी नहीं हुई कि क्या ये वो दूर बैठे हैं, उनसे वो लिख के नहीं देते हैं, ये सब नहीं परेशानी हुई। क्योंकि जब भी मैंने कहा कि भाई हमको क्या करना है, हमको स्मूदी लेना है, स्मूदी कैसे करना है, मैं तो पहले स्मूदी ले लिया नहीं था। तो उन्हें लिख करके दे दिया, टाइप करके दे दिया कि आपको स्मूदी इस तरीके से बनाना है।
तो इस तरीके से जो भी जहां मेरा क्वेश्चंस था, आई गॉट माय आंसर। मुझे आंसर और पहले देखिए, पहले जब मैं शुरुआत में, जब उस समय ना आपके जो है वेल्दी केयर था, वेल्दी केयर कंपनी थी, ना और कुछ था। तो हमने बहुत ढेर सारे किताब पढ़ डाली, बट दिस वाज ऑल रैंडम नॉलेज। वो एकदम जो बढ़िया नॉलेज होना चाहिए, जी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं था। बट जी इसमें तो हमको जो प्रॉपरली, हमको जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर नॉलेज हमको मिला। दैट वो हमको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। और मुझे लगता है जो हमारे कोविड जो आया, कोविड भी 2019 में, वो भी हम लोग को और नजदीक ले आया, क्योंकि उस समय तो किसी के साथ मिल भी नहीं सकते। तो इवन बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाने के समय भी वो मास्क लगा के जाना पड़ता था। तो फिर ऐसा नहीं लगा कि ये हम कहीं दूर बैठे हैं, हम भी कहाँ दूर बैठे हैं। तो ऐसा नहीं लगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये तो एक आपका जो आंसर था, क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा दूसरा जो क्वेश्चन आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, जी जी मुझे इजी बिल्कुल। रहेगा। कोई बात नहीं अशोक जी। तो मैं ये हम्म। कह रही थी आपसे कि जो आपकी अभी तक की जर्नी रही है, या अभी तक का आपका ओवरऑल, जैसे आपने इस प्रोग्राम में ट्रायल के तौर पे शुरू किया, एंड इवेंचुअली ट्रायल के बाद आपको धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, तो आपकी हैबिट्स कैसे चेंज होने लगी? शुरू में आपकी हैबिट्स क्या थी, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करने लगे, आपकी हैबिट्स या आपके खाने के तरीके, आपके एक्सरसाइज, आपकी रूटीन कैसे चेंज होने लगी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, देखिए, एक्चुअली ऋतुराज जी, मैं एक कॉमन इंडियन हूँ, जी बिल्कुल। आम इंडियन, आम भारतीय हूँ। तो रोटी दाल सब्जी चावल इत्यादि लेता हूँ। ऐसे मैं रोटी और चावल एक साथ कभी नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं था। या तो रोटी लूंगा या तो चावल लूंगा, जी तो वट एवर। तो हमारा ये हैबिट था, हम ज्यादा भी भोजन नहीं करते थे। पर जी हमें बेसिकली एक जो है मेरा खाना पीना ऐसा रहता था पहले, कि टाइमिंग ठीक नहीं रहता था। जी हाँ। और जो वेजिटेरियन फूड मेरा पिछले 40 नहीं 50 साल, पिछले 50 साल से वेजिटेरियन फूड में लेता हूँ। और जी वेजिटेरियन फूड ही मेरा डाइट है। पर जी सलाद में नहीं लेता था। और कभी कभी मन होगा तो ले लिया। और मुझे जो चीज़ पसंद था वो चीज़ अभी बैन हो गया। जैसे कि मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। अभी अभी उतना मूंगफली नहीं खा सकता मैं। और कई चीज़ ऐसे हैं जो जी नमकीन चीज़ है। मैं मीठा भी ज़्यादा नहीं लेता था। पर वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया, धीरे 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 करते 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 फिर यहाँ तक पहुंच गया। पर मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे करना है। जी यू कैन गिव क्रेडिट टू मी ऑन दैट एब्सोल्युटली। आई डिसाइडेड आई विल डू इट एंड आई विल फाइट। एंड हमने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। एब्सोल्युटली एंटायर क्रेडिट इज योर्स अशोक जी, क्योंकि हम सभी को बताते हैं, हम सभी को गाइड करते हैं, हम सभी के लिए एक पर्सनलाइज प्लान बनाते हैं, लेकिन 100% उसको अध्ययर करना, या डे टू डे बेसिस पे मोटिवेटेड रहना, ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक। और ये हर एक इंडिविजुअल को शायद नहीं हो पाती, और इसीलिए आप हमारे 2022 के हाईएस्ट अचीवर है, जहाँ पे आपने इतनी सारी चीजें अचीव की हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, also your ability to carry on your day to day activities, work out, your strength, your motivation, your positivity, all of these things have improved over a period of time, because your health eventually has improved. तो थैंक यू। अशोक जी, यू मोस्ट वेलकम अशोक जी। तो अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आपका HbA1c कम हुआ, क्या आपके डॉक्टर ने मेडिकेशंस में कुछ चेंजेस किए, या मेडिकेशन कैसे कम ज्यादा आपका किया? मेडिकेशन थोड़ा कम हुआ है हमारा। और डॉक्टर का कहना है, अगर इफ इसी तरीके से अगर रहा तो धीरे धीरे हम मेडिकेशन और कम करेंगे।
थोड़ा समय तो लगेगा. He was calculating in his own way that it took so many days to come to this state. I said, all right, from 8 to 6.3, 6.4 is nothing bad, but I'm ready to again fight, and I want to still come down. My health coach also says that you should not go. Your fasting reading should not be over 100, and this PP reading should not be 120, 130. So that also is my. I fix my. These are my goals. So I fix my goals, and then see that this is adhere to. I am adhere to all the points. Like जैसे कि उनने उनने मुझे ये कहा कि आप खाने से भोजन से आधा घंटा पहले या तो स्मूथी लीजिए, या तो चिया सीड का वाटर लीजिए विथ सिनामन. सो वो मैंने सिंसियरली किया, और जब नहीं किया मैंने एक्सेप्ट भी किया, हाँ मैंने नहीं किया है. सो सी वेरी पोलाइटली सेज, नेक्स्ट टाइम प्लीज डू इट. सो आई प्रॉमिस आई डू इट नेक्स्ट टाइम. समटाइम्स से ज्यादा लोग आ जाते हैं कभी मिलने के लिए, कभी कोई भूल जी जाते हैं, यही प्रॉब्लम होता है. तो जी अदरवाइज द doctor is happy, my health coach is also happy. So, and I could not have done this without the help of the health coach, and particularly this Wealthy Care. I could जी not have done it. If people ask me, you tell us how you do it. I said, I will tell everything, but you will not be able to do it because the motivation factor will not be there. आपको कौन बताएगा कि नहीं आपको ये करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये पहले खाना चाहिए, बाद में खाना चाहिए. तो ये सब कौन बताएगा? तो आप हेल्थ जी कोच ही चाहिए. हेल्थ कोच चाहिए मतलब यह तो आपको कनेक्ट करना है वेल्थ केयर के साथ. जी. जी जी जी. बिल्कुल अशोक जी, थैंक यू सो मच. हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एट दिस एज, आप जो एज अ सीनियर सिटीजन आप सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं, एट योर एज इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैव मोटिवेशन डेली. तो काफी सारे हमारे यूजर्स में क्या होता है, हु आर यूजुअली 40 years एंड अबव, कि वो एक हफ्ता अच्छे से सब फॉलो करते हैं, 2 हफ्ता फॉलो करते हैं, 3 हफ्ते फॉलो करते हैं, बट आफ्टर से अ मंथ और सो डेली फॉलो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो हमें एक्चुअली आपसे ये गाइडेंस चाहिए हमारे सारे यूजर्स के लिए कि कंटिन्यूअसली डेली वही रूटीन को मेंटेन करना, और जो टिप्स जो सजेशंस आपको मैं मेरी टीम दे रही है उसको अध्ययर करना, ये सब आपने कैसे अचीव किया, या आपका मेन मोटिवेशन क्या था? तो देन वी विल एंटर ए लिटिल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं, आज भी करते हैं. आई आई सेल्फ टॉक, यानी हम खुद से बात करते हैं कि देखो तुमने ये नहीं किया है तो फिर कैसे होगा, तुमको ये करना चाहिए. एवरीबॉडी शुड अपने से बात करना चाहिए, खुद से बात करना चाहिए. नॉर्मली ये बात ये हम छोड़ दे, दूसरों से खूब बात करते हैं पर खुद से नहीं बात करते हैं. हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं हमारे अंदर में कोई बैठा है जो हमको गाइड भी कर सकता है, और हमको हमारे बहुत कुछ हेल्प कर सकता है, पर हम उससे बात नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं. वो हमारा सबसे नजदीक फ्रेंड है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि तुमने ऐसा वहीं से उसी के अंदाज से हम खुद को हमारे मन को बोल सकते हैं कि तुम्हारी ऐसा तुमने यू हैव टेकन ए प्लेस, तुमने संकल्प लिया है, इसे क्यों नहीं करोगे, तुम बिल्कुल कर सकते हो. और विश्वास करिए, यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन जो भी बैठे हैं, ऑल दिस पीपल कैन डू बेटर देन मी. बस एक ही चीज करना है कि आप जो संकल्प करते हैं उसको आइडियर करिए, उसको छोड़िए मत, स्ट्रिक्टली आइडियर करिए. आपने संकल्प किया है कि मैं मिठाई नहीं लूंगा, तो मिठाई मत लीजिए. जब जरूरत पड़ेगी, जरूरत बहुत मन होगा तो थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, बस काम खत्म है. और आपने संकल्प किया कि मैं जरूर सलाद पहले खाऊंगा और आधा प्लेट सलाद खाऊंगा, तो आप आधा प्लेट सलाद खाइए. तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसे मैंने देखा, मैंने ऋतुजा जी मुझे मेरा जो फास्ट चेंजेस आया जब मैं जो है कच्चा जो वेजिटेबल्स खाना शुरू किया, रॉ वेजिटेबल्स.
दैट इज सलाड। सल नॉट ओनली द ओनली खीरा की नहीं, अलग अलग ये मेरा, मेरे तो कुछ कलीग्स हैं जो कि इवन बिटर गोर्ड करेला भी कच्चा खा लेते हैं। मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, बट मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स में ट्राई करता हूँ, फ्रेश वेजिटेबल्स जो मिल जाता है उससे ट्राई करता हूँ, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे। तो एक बार जो भी हम मन में निर्णय लेते हैं, छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, उसको आइडियर करते हैं, फिर धीरे धीरे वो पावर मिल जाता है मुझे, बड़ा निर्णय लेकर के बड़े चीज को आइडियर करने के लिए होता है। नहीं साहब, आप हमारे घर में आज आए हैं बहुत दिन के बाद, आज आपको तो दो तीन रसगुल्ले खाने ही है। हम हाथ जोड़ देते हैं दो तीन रसगुल्ले नहीं खा सकते हैं, उसको निचोड़ करके, जो रसगुल्ले को निचोड़ करके उसके वन फोर्थ हम ले लेते हैं, बस इतना हो गया। मैं वो मेरे लिए यही ठीक है, इतना ही ठीक है, आप प्लीज इतना मान जाइए। जी तो किसी भी तरीके से मैं लोग मुझे फोर्स करने पर भी मैं उसको नहीं मानता हूँ, पर सबका दिल रखता हूँ, पर पहले अपना जो है हेल्थ जी को जी देखता हूँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे अशोक जी। आई थिंक एक छोटी-सी सीख जो आपने अभी दी है, मैं सारे यूज़र्स को बताना चाहती हूँ। तो आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इंक्लूडिंग मी एंड माय एंटायर टीम that even if you're planning to work on multiple things, work on your busy routine, your busy schedule, you yourself should have a routine and you should adhere to it at least 6 days in a week. आई थिंक ये बहुत छोटी यस। बात है, हम सबको स्कूल से बचपन से सिखाई जाती है, बट एज वी स्टार्ट ग्रोइंग दैट समवेयर इज नॉट बिल्ड इन अस, एंड इट यस इज रियली इम्पोर्टेंट दैट वी गो बैक टू द बेसिक्स एंड वी स्टार्ट दैट कि जो रूटीन है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 दिन आपको उस रूटीन पे बने रहना, उस रूटीन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप ये करते हैं, तभी आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ एक सर्टेन वे में इम्प्रूव होना शुरू करती है, जी। जो हम सब के लिए काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अशोक जी आपने दी है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैं वेलकम। थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ, आपके फैमिली पे डिस्कस करना चाहूंगी। तो ओके। आई एम श्योर कि जिस तरह की डाइट आप अभी ले रहे हैं या जिस तरह का रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपके फैमिली, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके जो नेबरहुड, आपके जितने भी एक्वेंटेंसेस हैं, उन सभी ने आपकी किसी ना किसी वे में हेल्प की होगी। तो क्या आप 2-3 ऐसी चीज़ें हाइलाइट करना चाहेंगे, जहाँ पे आप आपकी फैमिली का सपोर्ट या आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स का सपोर्ट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कुछ तो देखिए, एकदम फैमिली हमारे साथ नहीं आई, फैमिली कैसे नहीं आई। तो जी, जी। पहले जब हमने कहा कि मुझे मल्टीग्रेन रोटी लेना है, जी, जी। मल्टीग्रेन ही लेना है, तो लोगों ने फू फू किया। मल्टीग्रेन क्यों, ओनली मल्टीग्रेन, व्हाई नॉट अदर रोटीज, केवल मल्टीग्रेन। हमने कहा केवल मल्टीग्रेन लेना है। पर धीरे धीरे जब उनने देखा कि अब चेंज हो रहा है, ये इतना मतलब इनएक्टिव नहीं है, और ही इज वेरी ये एंड ही जॉली एंड नॉट वरीड एंड नॉट स्ट्रेस्ड, तो उनने फिर धीरे धीरे हेल्प करना शुरू किया। मेरी पत्नी से मुझे हेल्प मिला है, मेरे डॉटर इन लॉ से हेल्प मिला है, मेरा सन से मिला है, मेरा ग्रैंडसन से मिला है, दे हैव ऑल हेल्प। whenever I needed this, okay, we will get you, don't worry. So they help. So then actually क्या होता है, शुरू शुरू में सभी लोग थोड़ा सा रेजिस्टिव होते हैं, बोले ये तो जी, दुनिया में यही चलता है, रोज दाली रोटी डाली दाल सब्जी चावल यही चलता है, आप कहाँ से ये नया ले आए कि नहीं आपको ऐसा खाना है वैसा खाना है। तो हमने कहा जी, देखो तो सही क्या हो रहा है, देख लो। और एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एक साथ सारे चेंज चेंज करना कतई ठीक नहीं है। बिल्कुल। उस समय स्ट्रेस्ड हो जाता है आदमी, एंड वन आफ्टर अनदर करना चाहिए, और ये हमारे हेल्थ को बखूबी से बढ़िया से समझाते हैं कि एक एक करके धीरे धीरे करके आप चलते चलते जाइए।
मुझे मेरे हेल्थ कोच तीनों ने कभी नहीं बताया कि आपको ये सारा चीज एक साथ करना है। मैं घबरा जाता, इतने सारा चेंजेस नहीं कर पाता। तो वो भी करते हैं, तो हम भी किसी से भी सुन करके एकदम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको अपने अपने खुद को तो खुद अकेले रहते हैं तो इजी रहता, पर हमारे साथ एक परिवार है। हम सब जी सोशल पीपल है, हम जी सामाजिक प्राणी हैं। तो जी उनको भी, उनको मन को भी कष्ट ना हो, और धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे कम करते जाइए, धीरे धीरे पहुंचते जाइए जहां आपको पहुंचना है। पर आप अंदर से आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, अंदर से डिटरमिन्ड रहना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव है। तो ये बहुत मेरे मैं उस तरीके से अगर देखता हूँ तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। दे हैव दे हैव हेल्प मी अ लॉट। यस। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अशोक जी। मुझे लगता है अगर हम खुद हमारे डिसीजन पे फर्म नहीं है, तो आजू-बाजू के लोग, फैमिली, फ्रेंड्स उनको एक्सेप्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो शुरू-शुरू में जैसे अशोक जी ने कहा, थोड़ा हमें रेज़िस्टेंस को एक्सेप्ट करना होगा, खुद का चेंज खुद में लाना शुरू करना होगा, उसके बाद ही एवरीवन विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट अशोक जी। अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपसे ये जानना चाहते हैं, इतने सारे फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे सेक्शंस हैं, सबसे फेवरेट सेक्शन आपका उसमें से कौन-सा है और वो क्यों? पहले तो जो देखिए, टू फाइट यू मस्ट हैव नॉलेज। तो नॉलेज के लिए या तो आप सारी जो हम हमारे सामने जो लाइब्रेरी में है उसको पढ़िए, उतने में भी नहीं बनता है। जब हम उसके बाद में जब वेबिनार अटेंड करते हैं तो ये क्लियर होता है, और उसके बाद में फिर हम बातचीत करते हैं हमारे कोच से तो एकदम जी, क्लियर हो जाता है। तो ये तीनों चीज मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके साथ साथ में जो जहाँ लिखता हूँ, मेरा मेरा इतना इतना हुआ है, ये हुआ है डायरी में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो डायरी में मैं रेगुलरली मैं लिखता हूँ कि मेरा बढ़ा है कि कम हुआ है कि कितना हुआ है, लिखता हूँ। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स, एंड व्हाट एल्स, दैट ऑल। ग्रेट, ठीक है। थैंक यू अशोक जी। मुझे आपसे ये भी जानना है कि आपके देखिए क्या है, ये एक पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम है, जो आपको हेल्थ कोच ने रूटीन दिया है, शायद वो सारे लोगों को ना फिट बैठ सके। तो उससे अच्छा अगर आप ऐसे 5 से 6 रूटीन चेंजेस बताएँ कि जिसका आपको आपके रूटीन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और पर्सनली आपको लगता है कि आपकी हेल्थ, आपकी डायबिटीज़, आपकी पूरी जर्नी में वो 5 या 6 रूटीन हैबिट्स या टिप्स ऐसे हैं, जो आपने रेगुलरली फ़ॉलो किए और जिसके वजह से आपको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा। तो वो कौन से 5-6 हैबिट्स हैं? आप हमें डिटेल में अभी समझा पाएँगे? हाँ, मैं बता सकता हूँ। एक तो दिस टेकिंग दिस चिया वाटर और स्मूथी half an hour before food, that is very interesting and very important. It helps. And then just after food, 30 minutes waiting, and after 30 minutes a walking about for about 20 minutes, 25 minutes, that reduces everything. हुँ, And taking your food in time, I take my dinner around 7:30, and my lunch is fixed at 12:30 to 1. So I maintain that. Even because of that, my medication is also maintained. Morning medication, uh, this noon medication, after lunch medication, and after dinner medication. They are all fixed. So actually, food is also a medication. So if food is taken in time and other additional medication is taken in time, it will be definitely helpful. And if it is at random, I forgot, आज भूल गए, कल वो करेंगे, या फिर 2 घंटे के बाद हमने कर लिया, ये सब प्रॉब्लम
बढ़ जाता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाता है और इतना हेल्पफुल नहीं होता है। मैंने देखा ये जो तीन चार चीज मैंने आपको बताया, ये बहुत ही है। एंड साथ साथ नॉर्मल मेरा 1 आवर वॉकिंग इज डेफिनेट, आई मेक इट। इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, I have no excuse. I do that inside my room, inside my house. I do that, and so उसको भी मैं नहीं छोड़ता हूँ। और स्पॉट मार्चिंग इज ए वंडरफुल थिंग। एक जगह खड़े होकर आप एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं योगा भी करता हूँ, योगा बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ, पर सब हफ्ते में 2 बार जरूर करता हूँ, जो 2-3 बार जरूर करता हूँ। तो इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। जी। बहुत बढ़िया अशोक जी। मैं यहाँ पे 1 मिनट लेके हमारे यूजर्स को बताना चाहूंगी कि दिस जर्नी जो अशोक जी ने अभी बताए, ये सारे टिप्स उनके हेल्थ कोच ने उनको बताए हैं। आप डायरेक्टली उसको फॉलो मत कीजिए, बिकॉज एवरीबडीज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन योर करंट वेट, योर हाइट, your age and what is your HbA1c and your blood sugar levels। तो जो शायद अशोक जी को फिट बैठ रहा है या अशोक जी के पर्सनलाइज रूटीन में, पर्सनलाइज लाइफस्टाइल कोचिंग प्लान में यूजफुल है, शायद आपके लिए वो सारी चीजें सिमिलर ना हो। दैट्स द रीजन वी क्रिएट पर्सनलाइज्ड कोचिंग जर्नीज फॉर ईच ऑफ आर यूजर। ये अशोक जी फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनको फायदा हुआ है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। अपने हेल्थ कोच से एक बार डिस्कस कीजिए कि मेरा वजन इतना है, मैंने वेबिनार में ये सुना था, तो इसमें से कौन सी चीजें मैं फॉलो कर सकता हूँ, और उसके बाद ही उस पर गाइडेंस लेके फिर ही उसको फॉलो करने की अपने रूटीन में कोशिश कीजिए। ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू अशोक जी। लेट्स मूव ऑन अहेड। मुझे थोड़ा सा ये भी आपसे जानना है कि डेफिनेटली आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई, आपकी ब्लड शुगर कम हुई, आपका वेट इंप्रूव हुआ, बट अदर देन योर फिजिकल एस्पेक्ट्स और योर हेल्थ एस्पेक्ट्स, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी पे, ओवरऑल पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, आपकी मेंटल हेल्थ पे, इन सारे हेल्थ इंप्रूवमेंट्स का कैसे असर पड़ा? हाँ, एक तो मेरा फोकस बढ़ गया, मेरा एंड्योरेंस बढ़ गया। यानी मैं इतने जल्दी थकता नहीं हूँ। और को पहले पढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, अभी पढ़ लेता हूँ लंबे समय तक। जी। क्योंकि इस उम्र में ये एक प्रॉब्लम तो है ही है, प्राय अधिकांश लोगों को पढ़ना, याद रखना, ये सब कम हो जाता है, इतना उतना नहीं कर पाते हैं। तो इससे, इसके कारण ये जो चेंजेस हुआ है, इसके कारण ही होगा। मैं आपको, आपने जो कहा मैं उसको ऐड भी करना चाहता हूँ कि हमने जो वेबिनार में देखा, उसके बाद में हमने कंफर्म किया है अपने हेल्थ कोच से कि मेरे लिए ये उचित होगा कि उचित नहीं होगा। सो जी। स्लाइट चेंजेस दे हैव मेड। सो मैं जो कह रहा हूँ भाइयों बहनों, आप इसको सीरियसली एकदम एग्जैक्टली आप उसको यूज मत करिए, पर with the help of your health coach you can use that knowledge, and then you can discuss and use that knowledge। अच्छा, तो ये इसके साथ साथ मेरा जो है, आई हार्डली फॉल इल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले थोड़े थोड़े में जुकाम हो जाना, थोड़े में खांसी हो जाना, गले में खराश हो जाना, ये सब होता था। आजकल कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। आई थिंक इट द क्रेडिट गोज टू माय रेगुलर, आई मीन रूटीन। जो रूटीन हम फॉलो करते हैं वो रेगुलर हो गया। और माय फूड इज आल्सो गुड फॉर माय हेल्थ। इसलिए ऐसा होता होगा। जी बिल्कुल। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि बस उनके फिज़िकल एस्पेक्ट्स में, उनके मेडिकल हेल्थ में ही इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट उनका ओवरऑल स्टेबिलिटी इन इम्यूनिटी, जो आजकल के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के वायरल इन्फेक्शंस या वायरसेस हम देख रहे हैं, उसमें इम्यूनिटी को स्टेबल रखना या इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपका रूटीन, आपकी हेल्थ, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को आप
रेगुलरली मेंटेन करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, योर इम्यूनिटी ऑल्सो इन टर्न इज गोइंग टू इम्प्रूव. Please ensure that you follow at least 80% of the suggestions given by your coach. तो ये तो सारी हमने पॉजिटिव और अच्छी बातें कही अशोक जी, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं देर आर सम ट्रेट्स, सम ड्रॉप और सम लो लेवल्स विच वी डेफिनेटली शुड डिस्कस अबाउट. तो अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे आपको काफी क्रेविंग्स हुए, कि आपको लगा कि हाँ अभी थोड़ा खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मीठा, नमकीन या जो आपकी फेवरेट आइटम्स हैं उनको खाने का कभी मन हुआ, तो उसको किस तरह से आपने कंट्रोल किया, या वो टाइम पे कैसे आपके हेल्थ कोच ने आपको गाइड किया, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे हमको. मीठा नहीं खाने के लिए मेरा मन तो मान लिया, पर नमकीन के लिए वो विद्रोह कर लेता है, रिवोल्ट करता है। तो जी. रिवोल्ट करता है तो फिर हमने पूछा था, तो हमारे हेल्थ कोच ने कहा कि आप वो नमकीन के साथ कुछ वेजिटेबल्स मिला के खा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत जैसे भेलपुरी जैसा है, तो उसमें थोड़ा सा वो मिला करके थोड़ा बहुत ले लेते हैं चाय के साथ। और अवॉइड करते हैं कुकीज एक्सेट्रा, जो ये सब अवॉइड करते हैं। और जो रेडीमेड फूड कम खाते हैं, बहुत रेयरली खाते हैं। चल जाता है इस तरीके से। सो पर फाइट इज गोइंग ऑन एंड इट विल गो ऑन फॉर लास्ट 3 years. I am a fighter, and I think to the end of this journey in life, करेक्ट. I will remain a fighter. Wow, absolutely amazing. I'm very happy to hear that. I think हम और हमारी टीम ही दूसरों को मोटिवेट नहीं करते, कई बार यूजर्स भी हमें मोटिवेट करते हैं, जिसमें से डेफिनेटली आप हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट अशोक जी. अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओवरऑल आपकी जो ये पूरी जर्नी रही है एक्यूचेक वेल्दी की, उसको अगर आप समराइज करेंगे, तो 5 बेस्ट पॉइंट्स या 5 सबसे बेहतरीन चीजें आपकी इस पूरी जर्नी में कौन सी रही, क्या रही, कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा कुछ शेयर करना चाहेंगे. नहीं तो नंबर वन इज माय नॉलेज, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। क्योंकि जी. हमारे हमारे अगर इसके ऊपर ज्ञान नहीं होता तो हम इसको समझ नहीं पाते। तो हाउ इट, आई नेवर न्यू कि ये पॉसिबल है कि हमारे फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कैसे किया जाए। और हमारा जो है पीपी को कैसे कम किया जा सकता है विदाउट एडिंग टू माय मेडिकेशन। तो ये सब मेरे मन में जब आया तो मैं जैसे वेबिनार से लेकर के, लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ने के बाद ही, नाउ डेज आई नेवर लुक आउटसाइड बुक्स ऑन डायबिटीज और एनीथिंग। आई व्हाट एवर आई वांट आई गेट इट फ्रॉम वेल्थी केयर। वेल्थी केयर से सब कुछ मिल जाता है मुझे, बाहर से ढूंढ लाने की जरूरत नहीं, बाहर से किसी से पूछने की जरूरत नहीं। दैट वाज ए ग्रेट चेंज इन मी। और पहले बहुत पूछना पड़ता था, जानना पड़ता था, तो अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तो एक हुआ। दूसरा दूसरा हमारे हेल्थ कोच हमेशा कहती थी कि तो आपको पानी 3 लीटर से कम नहीं लेना चाहिए। सो पानी के लिए भी इतना अच्छा हुआ, मेरा डॉक्टर भी नाराज होता था, आप पानी कम लेते हैं, आप पानी कम लेते हैं। तो तो उससे हमारे हेल्थ और इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये चार पांच से पानी का एक, वॉकिंग रेगुलर, यानी एक्सरसाइज रेगुलर, एंड देन मेडिकेशन एंड दिस थिंग इन टाइम, दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी। हमने उसको किया, और हम उसी में लगे रहते हैं कि हम वो ना करें जो उचित नहीं है, उसको ना करें। जी. जी। और पर बिल्कुल. मैं एक बात करता हूँ, कभी कभी मुझे मेरे हेल्थ कोच का ऊपर बहुत नाराजगी होती है, मैं बताता नहीं हूँ। नाराजगी होती है, कब नाराजगी होती है? जैसे वह खाने के बाद नींद आती है, पर्टिकुलरली डायबिटिक लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है। तो जी. उस समय हम कहेंगे कि नहीं, आप आधा घंटा बैठिए सो दैट योर डाइजेशन इज प्रॉपर, एंड आफ्टर दैट यू वॉक फॉर 20 minutes। दैट समटाइम्स मेक मी irritated, but sometimes for a few seconds or few minutes I am not happy,
But after that, I tell my mind that because of that only your body is becoming good. So you should not get stressed. So फिर बिल्कुल। हमने ये शेयर भी किया हमारे इनके साथ, टहल कूद के साथ हमने शेयर भी किया कि हम कभी जी, कभी आपसे नाराज भी हो जाते हैं, पर फिर जी, हम खुद को समझा लेते हैं। जी। जी। ग्रेट। Thank you so much, Ashok ji. I think very motivating, very honest, and lot of information in today's session. I'm sure all our users are equally motivated as me and my team. Let us go through their questions and let us understand what are the things which they want to know from today's discussion. Hello, Chakravarti ji. Thank you so much for dropping in and asking your questions. So, Ashok ji, हमारे ओल्ड यूजर हैं चक्रवर्ती जी, वो हमसे पूछ रहे हैं कि अशोक जी, इज एनी ऑफ योर एंसेस्टर हैव डायबिटीज इन पर्टिकुलर, mostly mother's side genetic disorder will be transferred to present family members. When did you detect diabetes? Ashok ji, did you get early diabetes or was it at the age of 60 years? पहले ये दो तीन क्वेश्चंस आप आंसर कर दीजिए, मैं वन बाय वन आपको बोलती हूँ। सबसे पहले तो आपका एंसेस्टर हिस्ट्री रहा है मैटरनल साइड से कुछ डायबिटीज का, तो वो। मैटरनल साइड से कोई डायबिटीज नहीं था मेरा, अच्छा। पर माय ग्रैंडफादर हैड डायबिटीज एंड ही सफर्ड। आई हैव ओके। सीन हिम सफरिंग एंड इन दिस हम ये कह सकते हैं कि 23 years, नाउ आई एम 75, so 23 years हम्म। back हम्म। my diabetes was my this thing the discrepancy, health discrepancy was diagnosed. And ओके। my doctor said that it must be 10 years before that, because this borderline game goes on, and people think that I'm in borderline, so I'm not diabetic. But I've never got my tested, so I never knew. But 23 years back, in 2000, I came to know first time. ओके। Yes. ओके, ग्रेट। सो वन मोर क्वेश्चन अशोक जी, um, did you have any idea on freestyle uh, Libre glucose monitoring system, which can be fixed on your shoulder to monitor through mobile time to time? No, आपको I ऐसी am कोई sorry. I डिवाइस? do not know. I do not know about that. I use कोई बात normal AccuCheck Active this thing. So नहीं, मीट। active instrument, and it is good. Great. All right. Thank you, Ashok ji, for answering that. Sudha Hariharan, thank you so much for your question. Sudha ji is asking Ashok ji, what is Mr. Ashok Das' typical diet in a day? Can you please share your details? So कोई बात नहीं, आप अपने दिन का ओवरव्यू दे दीजिए कि सुबह नाश्ते में, लंच में क्या क्या लेते हैं आप, एंड हाउ इज रफली योर डाइट लाइक? I'll start with this morning breakfast. Breakfast, I prefer this uh, actually this pesiretto or utapam with a lot of vegetables, or sometimes idlis, but less number of idlis. And then I take this boiled, germinated this seeds. Hmm. Along with that, added to that onion and tomato, etc., etc. And daytime, two chapati and a lot of vegetables, raw vegetables. Uh, then two kotoris of dal, or some paneer, or some paneer, and then boiled vegetable, some sabji, boiled vegetable sabji. My favorite is sambar, so if I get sambar, I'm very happy. And then evening I take tea with um, the makhana, this fried makhana most of the times, and there's a baked makhana, not fried, and then tea. Let me
tell you about my evening. Evening also one roti. The daytime, if I don't take two rotis, I take two spoons of two small tablespoons of red rice. That is enough. I am feeling full and I'm feeling good. And during the night, what I do, I take about one roti and then so some protein and mostly this again salad, etc. So it is a this way it covers my whole day. Ji. Thank you so much for sharing that, Ashok ji. Simple meal, simple food, homemade food, but if taken at right intervals and in the right quantity, can definitely help you also reduce your blood sugar levels. Speak to your health coach today to know how will your journey be personalized. So we have a few more questions, Ashok ji. Hello, Josh. How are you? Thank you so much for your questions today. So, Josh is asking us a few things, Ashok ji. He wants to know how much exercise do you do and how many hours do you sleep? Exercise is on early in the morning. Early in the morning, either I walk or I do spot marching. Sometimes it rains where I am now presently. It rains most of the time, so I cannot go out for work. So I do spot marching, and then after that, after about half an hour or so, I take my breakfast, and then after every major meal, I do walk, and in the evening also I walk about 45 minutes, 40 minutes, 45 minutes. That's all. That is Great. enough. Yes. Thank you so much. Over What about exercising sleeping pattern? makes me tired, so I don't do over exercising. Yes, Okay. What about your sleeping pattern, Ashok ji? I'm a great sleeper. Where I read some books, and while reading, I know 2 3 pages, I feel sleepy. Keep the book down and sleep. So my sleeping pattern is good. I sleep well and get up around 4:30 or so. Okay. So it is roughly 7 to 8 hours. Yes. Okay. Great. Okay. One more question from our very own Josh. Did you take only metformin? Was there no insulin recommended? Was there only tablets? Till now, I am taking only tablets. I have not taken any this insulin yet. My doctor Okay. believes that as long as I can manage with tablets, I should not. I once asked him to make it a small dose of these things. He said no. So I take only tablets. Okay. Great. So Sudhaji is suggesting you why you don't include millets in your diet. I do take millets. I do take millets, and particularly in the evening, in the I mean night, I take millet. And millet is so this millet ragi particularly. This ragi idli is a favorite of me, and during breakfast I take ragi idli sometimes. But then it Okay. also depends on my family what they provide. I cannot always Correct. ask them to give me what. So I have to sometimes I have to choose. If I say that no, this is not for me, so they agree. ग्रेट ऑलराइट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट शंभूलाल जी हमसे पूछ रहे हैं क्या चीनी के बगैर चीनी के बिना कॉफी दिन में 2 बार ली जा सकती है तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी अशोक जी फॉर Well, शंभूलाल जी तो शंभूलाल जी आप बिना चीनी के कॉफ़ी दिन में 2 बार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी 100 एमएल 3 बार लीजिए। मतलब आधी या 1/4 कप 3 बार ले सकते हैं, ताकि आपको okay, वो फीलिंग भी आए कि आपने कॉफ़ी पी ली है,
उतनी आपके लिए सफिशिएंट है, और जो कॉफी की क्रेविंग है वो भी आपकी बनी रहेगी, निकल नहीं जाएगी। और इंस्टेड ऑफ हैविंग कॉफी विथ मिल्क, आई विल सजेस्ट दिन में एक बार वैसी अच्छी खासी दूध वाली कॉफी आप ले सकते हैं, बट बाकी दिन में एक बार आप जो ब्लैक कॉफी है वो आप लेंगे। उस पे आपके हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होगा, और ओवरऑल आपकी जो कॉफी क्रेविंग्स है वो भी उससे कम होंगे। तो डेफिनेटली दिन में 2 बार ले सकते हैं। कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, किस तरह से लेनी है, आपके हेल्थ कोच से बात कीजिए, शी विल गाइड। यादव जी हमारे साथ है। गुड इवनिंग यादव जी, कैसे हैं आप? आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। यू टोल्ड, सो अशोक जी ये क्वेश्चन आपके लिए है। यू टोल्ड दैट अ डायबिटिक फील्स स्लीपी आफ्टर मील्स, हाउ डू यू पर्सनली अवॉइड इट, एंड हाउ डू यू मैनेज नॉट स्लीपिंग आफ्टर मील्स? I do some important work at that time. I keep this thing. Uh, so I don't feel sleepy. If it is some urgent matter, I have to complete. I complete to don't feel sleepy. So it is about a half an hour. After half an hour, I start walking. When I start walking, so that sleep goes away, and after that, I sleep for an hour. It is not true that I don't sleep at all in the daytime. No. ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट अशोक जी। सुधा जी पूछ रही हैं कि डी प्रोटीन पाउडर मिल्क में लेना, डज इट हेल्प, सजेस्टेड बाय माय डॉक्टर। सो प्लीज अलाउ मी टू आंसर दिस क्वेश्चन सुधा जी। सो सुधा जी, वॉट एवर योर डॉक्टर हैज सजेस्टेड, please go ahead with it. He is physically examining you. He is giving you medical medicine dosage. He is practically checking all your improvements in your body. So please ensure जो डॉक्टर ने सजेशन दिया है, आपके हेल्थ कोच को वो बताइए कि मुझे ये डॉक्टर ने बोला है। प्लीज गो फॉर इट। कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कौन से दिन पे लेना है, please speak to your health coach and she will be able to guide you in detail about this program and how to take particular protein powder or what supplements doctor has suggested for you. All right, so a lot of questions, I think lot of queries which you helped all our users for today. So it was great connecting with you, Ashok ji. Before we take that entire positive energy and motivation from you, it will be great if you have any suggestions or any specific takeaways for all our AccuCheck Wealthy family who is trying to work on their weight, their blood sugar levels, their HbA1c. Do you have any suggestions for them? No, first suggestion is don't try all everything. Try to be okay from the day one. Slowly, go up the steps. Number one suggestion. And as I have understood, for people who are having diabetes, their one problem is next is this urinary tract infection. We get urinary tract infection if we don't take sufficient water. So water intake should be sufficient. Everyone should ensure that water intake should be sufficient. And there is nothing wrong in drinking water. It is not a medicine. So no problem. So these two things I will request everyone. And third is that whatever, please talk to your health coach for everything, whatever comes to your mind. And because it is a personalized program, so health coach is the best person to tell us what we should do, कितना करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आप बात कर सकते हैं और you can gather the knowledge. Thank you. Bilkul. It was great, Ashok ji. Thank you so much for being associated with us for this journey. You have been the highest achiever for the year 2022. Once again, for all our entire AccuCheck Wealthy family, a person who is 70 to 75 years
plus in age, highest in motivation, highest with positive attitude, somebody who absolutely loves connecting with each and every feature and the health coach on a day to day basis, somebody who has worked on his health tremendously, who can run marathons now, who can go for long street walks, who can teach yoga to his friends, who has reduced his HbA1c to 2% and beyond, who's already a pre-diabetic from a heavy diabetic when he started 1.5 to 2 years back with us, somebody who has controlled his blood sugar levels, his post meal by 150 to 200 mg, and his fasting by 100 to 200 mg. Wow, commendable Ashok ji. Once again, thank you so much for being the highest achiever of the year 2022. We look forward to creating a lot more people like you who not just become a part of this AccuCheck Wealthy journey, but also try to motivate whatever they have learned, share their knowledge, spread their positivity, and try to build a healthy culture all over the world. So this is what AccuCheck Wealthy is all about. Just for the information for all our users, today first time I'm actually looking at Ashok ji. We have not had any conversation. There was no guidance which was given to Ashok ji कि आपको ये बोलना है, इस तरह से डिस्कस करना है. Whatever today is discussed is completely organic, completely as per what he feels and his own experience out of his last 1.5 to 2 years. Thank you so much, Ashok ji, for being available to us, for being the highest achiever of 2022 Thank you. and motivating our entire AccuCheck Wealthy team. Thank you once Yes. again for joining us today. Thank you. Thank you. Thank everybody. Thanks. All right. All our AccuCheck Wealthy family, thank you so much for listening to our Achiever of 2022, Mr. Ashok Das. We will come back to you next week with a lot more information, a new set of knowledge sharing series, and a lot of new speakers. Till then, take care of your health and keep logging. Bye bye.